हाँ, so we are live right now. Let me check हम लोग लाइव है कि नहीं फेसबुक में। आपको ये ऊपर चाहिए? I'll do it for you. कितना? Ouch. कितना इतना? How much? That's enough. That's enough? Don't use this one. Use the other one. इसमें से remove करना पड़ेगा ना. This? I brought the other one here. Use this. Use this instead. Remove this one. इसको सीधा कर लो ना. उसमें मेरी फेसबुक चलाना. हाँ जी, तो हम लोग लाइव हैं। आप फेसबुक पे जाके अगर लिंक शेयर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ओके, सो ये जो हमारे फेसबुक पे अभी हम क्या करें, जो आप हमारी लिंक आ रही है ये, या होम स्कूलिंग इंडिया पे जाऊं मैं? होम स्कूलिंग इंडिया पे जाइए। होम स्कूलिंग इंडिया पे आप जैसे ही जाएंगे उधर पे आपको दिखेगा कि हमारा ये लाइव चल रहा है। आप उस वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपके ऊपर वो लिंक आ जाएगा, ब्राउजर के ऊपर जहां पे हम लिंक डालते हैं। उस लिंक को आप कॉपी करके अपने प्रोफाइल में पेस्ट कर सकते हैं या किसी को भी व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं। इसमें आई कैन सी 3 वीडियोस। हाँ, ओके, नाउ इट इज फाइन, दिस इज ट्रू। ओके, इट इज सौरभ एंड ऑल, यस। Ouch. अरे भाई इसको खोलो, इसको लॉक को। तो हम शुरू करें? जी सौरभ जी, ठीक है। एक मैं सभी को ऑफिशियली वेलकम करता हूं। थोड़ा सा हम लोग सीख रहे थे, जान रहे थे, काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। तो वेलकम एवरीवन टू आवर होम स्कूलिंग इंडिया सैटरडे लाइव ऑन आवर फेसबुक ग्रुप। एंड टुडे वी हैव भगवान स्वरूप जी विद अस। So we are connecting to him over a huge distance. I mean, traveling wise काफी लंबे हैं। ये यूएई में बैठे हैं और हम इंडिया में हैं। So I welcome Bhagwan Swarup ji today, and today the topic of discussion is accelerated maths and science and how we can create small learning spaces in our home based on this kind of accelerated science and maths. So Bhagwan Swarup ji, welcome to the Saturday Live. और कैसा लग रहा है? नमस्ते। इट्स ग्रेट। यहाँ पे बड़े बड़े लोगों को देखा है सर, ओपर को देखा है, और इट्स अनबिलीवेबल। मैं तो उनके कहीं भी नहीं बैठता। बट आई एम एज पैशनेट एज देम सर। ग्रेट। सो भगवान जी, अगर हम आपके कहानी से थोड़ा सा शुरू करें, कैसे आप जो हैं, आप पहले इंजीनियर थे, फिर आप यूएई में गए और फिर जो है आप राइट नाउ होम स्कूलिंग कर रहे हैं और एक डू इट योरसेल्फ स्पेस, लर्निंग स्पेस आपने अपने आसपास क्रिएट करके रखा है और आप सभी लोगों को इस चीज को करने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं और आप मैथ्स और साइंस को लेके काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तो अगर हम इस चीज को एक कहानी के तरह आपसे हम सुनना चाहेंगे तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? सौरभ जी, ये असल में एक लर्नर की कहानी है, एक सेल्फ लर्नर की, जिसमें इस कहानी में एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है। जहां से भी कहानी शुरू करना चाहे इंसान वहीं से कर सकता है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, लोग कहते हैं कि मेरे पास पढ़ाई नहीं है, मेरे पास ये चीज़ें नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा। मेरा काम हमेशा, मैं होम स्कूलर्स हैं या कोई भी पेरेंट्स हैं या खुद इंसान है, मैं हमेशा ये कहता हूँ जहाँ खड़े हैं वहीं से शुरू कर दो। तो जो मेरी यहाँ पे स्टोरी है, मेरा जो कैरियर है एज एन ऑटोमेशन इंजीनियर, उसमें मेरी पढ़ाई का कोई रोल नहीं।
मेरे कस्टमर्स को नहीं पता। अगर कोई कस्टमर इस वीडियो को देख रहा होगा ना, ही वुड बी शॉक्ड टू अंडरस्टैंड दैट आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर। पहली बात तो कभी बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और मेरा जो बिजनेस है वो पूरा ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का है। आप समझिए, ये पेरेंटिंग की स्टडी या होम स्कूलिंग तो आज शुरू हुई है, बट आई एम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। बिकॉज मैं मैकेनिकल इंजीनियर था, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई अंडरस्टूड कि ये मैकेनिकल से कुछ नहीं होने वाला है। सो वी हैव टू लर्न एंड वी हैव टू री इन्वेंट आवर सेल्व्स। सो आई री इन्वेंटेड माई सेल्फ। आई हैड एजुकेशन इन मैकेनिकल, but I reinvented myself, learned everything about electronics, automation, robotics on my own, and then I entered robotics business. Because mechanical का सर इंडिया में क्या था, I am talking about way back in 2000, उस वक्त मैकेनिकल का लोग हमारे यहाँ तो सब कर लेते हैं ना सर, बियरिंग चेंज करना कोई भी बदल लेगा, बट इलेक्ट्रॉनिक्स में हाथ नहीं डालता है कोई। सो आई थॉट कि हमारा बिजनेस इंडिया में नहीं चल रहा है, बिकॉज वी हैड टू एंटर समथिंग डिफरेंट। तो मैंने खुद को री इन्वेंट किया। तो सेम चीज जब मैंने होम स्कूलिंग शुरू की अपने बच्चे के साथ में, देन आई डिड द सेम थिंग। आई हैड नो बैकग्राउंड इन एजुकेशन। मेरे पास सबसे बड़ा होता है, मैं सवाल नहीं पूछता किसी से। पहले सवाल पूछने से पहले मैं खुद को तैयार करता हूं कि क्या मैं सवाल जो पूछ रहा हूं उसकी कोई कीमत है, उसकी कोई क्वालिटी है या नहीं। हमारे यहाँ आपने देखा होगा सर, होम स्कूलिंग फोरम पे कोई भी आएगा, एक लिख देगा, आई एम स्टार्टिंग टू होम स्कूल, प्लीज हेल्प मी। आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ देम, प्लीज अंडरस्टैंड। मैं एक चीज कह रहा हूं कि अगर हमें किसी से कोई सवाल पूछना है, सो हमें अपना लेवल इंक्रीज करना होगा, हमें अपने आप को एजुकेट करना होगा, जिससे कि हमारे सवाल में दम हो, तब हम पूछें। अगर वो आदमी जो पूछ रहा है सवाल, मैंने किसी से नहीं पूछा कि होम स्कूलिंग क्या होता है। सबसे पहले मैं इंटरनेट पे गया, मैंने कहा होम स्कूलिंग क्या भला है, पहले थोड़ा पढ़ा। उसमें बड़े बड़े लोग लिख के गए हैं सर। हमारे ह्यूमैनिटी की एक सबसे बड़ी काबिलियत है, हमसे सबसे बड़ी एक कीमत है, वो है जो गटनबर्ग ने बुक छापने की इन्वेंशन किया। आई कंसीडर वो जो चीज है वो सबसे बड़ा इन्वेंशन है मानवता के लिए। किताबें हैं, इतने बड़े बड़े लोग लिख के गए हैं, कौन बताएगा तुम्हें होम स्कूलिंग फोरम में जो वो लिखा हुआ है पहले से जॉन हॉल्ट ने। मैंने वो किताबें उठाई, सारी किताबें पढ़ी खुद। तो आई एम ए सेल्फ लर्नर। मेरी फिलॉसफी, मेरे लर्निंग का तरीका सब में वो सेल्फ लर्निंग सबसे पहले आता है। सारे पेरेंट्स को, सारे बच्चों को मैं सिर्फ ये कहता हूं, सवाल पूछना सीखो। सवाल पूछना तब आएगा जब आप उन किताबों को पढ़ोगे जो पहले लिखी जा चुकी हैं। उन्होंने तो उन सवालों को एक्सप्लोर कर लिया है ना सर। नाउ यू लर्न हाउ टू आस्क क्वेश्चंस बियॉन्ड दोज बुक्स। Then you go about living your life, looking for questions, and then you keep exploring your answers. You are a lifelong learner now. ये सवाल है। तो ऐसे करके मैं इंडिया से यूएई आया, वो एक अलग स्टोरी है। I went here, came here via Europe. तो मैंने यहाँ पे अपना बिजनेस शुरू किया, और उस बिजनेस में मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। हम रोज सीखते हैं। तो वही मैं सबको कहता हूँ कि आप सीखने की आदत डालिए। ये सीखने की आदत बहुत इंपॉर्टेंट, और हमें बच्चों को यही देना है सर। अभी कोविड आया, इट प्रेजेंटेड टू अस सो मेनी क्वेश्चंस दैट वी हैड नेवर फेस्ड बिफोर इन आवर लाइव्स। वी डोंट नो कि वो सवाल क्या आएंगे। अभी जो आ गया वो तो हमने चलो देख लिया, आगे 20 साल बाद हमारे बच्चों के जीवन में क्या आने वाला है हमें नहीं पता। तो हमें उन्हें सेल्फ लर्नर बनाना है। तो सारी एजुकेशन फिलॉसफी होम स्कूलिंग की सेल्फ लर्निंग के लिए है। बच्चों को सेल्फ लर्नर बनाना है तो उसके लिए हमें खुद सीखना होगा। वी कांट गो अबाउट replicating what others have done, because each child is different, each parent is different, each environment is different. तो हमें उस एनवायरनमेंट के हिसाब से, उस बच्चे के हिसाब से ही तो करिकुलम तय करना है ना सर। यही तो फिलॉसफी है होम स्कूलिंग की, यही ब्यूटी है। अगर मैं आपसे पूछूं आप अपने बच्चे के लिए क्या करें, आई कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, फाइन। तो आई डोंट वांट any of these homeschooling parents to take what I am doing as a benchmark. No, कोई बेंचमार्क नहीं रखना है, किसी से नहीं पूछना है। आप अपना करिकुलम तय करें, आप अपने बच्चे को देखें, आप अपने आप को देखें, एंड ग्रो योर सेल्फ, रेज योर सेल्फ, और अपने बच्चे फिर सेल्फ लर्नर बनाना है। हमारे कुछ नहीं करना है। हमें से जॉन हॉल्ट ने यही कहा था कि उन्हें बस 2 चीजें करनी है होम स्कूलिंग से। पहला, अ लाइफ वर्थ लिविंग एंड अ वर्क वर्थ डूइंग। आप मैथ जानते हैं नहीं जानते कोई मैटर नहीं करता सर लाइफ में। आप साइंस जानते हैं नहीं जानते हैं कोई मैटर नहीं करता।
अ लाइफ वर्थ लिविंग एंड अ वर्क वर्थ डूइंग, वही तो हमें चाहिए जिंदगी के लास्ट में, जब हम काम कर, अभी मैं जो काम कर रहा हूं, आई एम डूइंग अ वर्क दैट इज वर्थ डूइंग एंड आई एम लिविंग अ लाइफ, दैट्स ऑल। अब वो कैसे पहुंचे यहां तक, आप होम स्कूलिंग से पहुंचे, कॉलेज डिग्री से पहुंचे, आप हार्वर्ड गए, कुछ भी हो, तो इसमें हमें लर्नर बनना है। तो आई कंसीडर माई सेल्फ एज ए लर्नर हु हैपन्स टू बी एन इंजीनियर। ओके, एक बात और जो है, आप मुझे बार बार सर बोल रहे हैं, तो आप प्लीज मुझे सर ना बोलें, आप मुझे सौरभ जी, सौरभ, जी। हाँ सौरभ भी बुलाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो आप जी, मुझे सौरभ ही बुलाएं। और ओके। हमारे कम्युनिटी में एक तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया है कि ऐसे सवाल बार बार आते हैं, और जो ये सवाल उठा रहे हैं उनको पहले इस सवाल को और पुख्ता बनाना है, तो अपने लर्निंग को और पुख्ता करना है और सॉलिडिफाई करने हैं, अपना खुद का रिसर्च करना है, खुद का लर्निंग करना है। और ये सारे जो बेसिक सवाल है, इसका जवाब ऑलरेडी दुनिया भर में है, काफी सारी किताबें लिखे गए हैं, रिसर्च किए गए हैं, इंटरनेट पे भर भर के हैं। तो ये सारे बेसिक सवाल से ऊपर वाला सवाल, तो अगला सवाल जो हमारे कम्युनिटी में सबसे ज्यादा आता है वो ये है कि अगर मैं होम स्कूलिंग कर रहा हूँ, अगर मैं बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहा हूँ, तो उसको सर्टिफिकेट्स कहाँ से मिलेंगे, सर्टिफिकेट्स और मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? अगर वो नहीं मिलेगा तो हायर एजुकेशन कैसे होगा? अगर हायर एजुकेशन नहीं दे पाएगा तो अच्छा कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा, अच्छा कोई काम नहीं मिलेगा। तो इस चीज पे आपका क्या सोच है? सर, एक सबसे बड़ी बात यह है कि वाई आई चोज टू डाइवर्ज दैट आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर डूइंग बिजनेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन। मैंने कहा ना, अगर कोई मेरा कस्टमर सुनेगा तो ही वुड बी शॉक्ड, वो कहेगा यार मैं कर क्या रहा था अब तक। इससे पता लगता है कि यू डोंट नीड डिग्रीज टू बी सक्सेसफुल, यू नीड नॉलेज, यू नीड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स दैट यू आर डूइंग। आपको काम जानना चाहिए। आपसे कोई बिजनेस में ये नहीं पूछेगा आप जानते हो काम कि नहीं जानते हो, आपकी डिग्री क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, दे हैव अ ब्रोकन डाउन मशीन, कैन यू फिक्स इट। तो ये तो प्रैक्टिकल बात हो गई। अब दूसरी बात यहां आती है कि वो तो सब ठीक है, मगर समझिए मुझे यूएई आना है, तो यूएई गवर्नमेंट तो ये कहेगी ना कि भैया सर्टिफिकेट लाओ, तुम डिग्री है तुम्हारे पास तो मैं तुम्हें यूएई में आने दूं। मुझे तो आई डोंट नीड जो इलिटरेट्स हैं, वी डोंट अलाउ देम इनसाइड यूएई, राइट? इट इज द ट्रुथ, बिकॉज यहाँ पे यूएई में एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है डिग्री का, तभी आपको इंजीनियर का वीसा मिलता है, तभी आपको वीसा दिया जाता है। अब वो सर्टिफिकेट्स कहाँ से आएंगे, वो सवाल है, वो जायज सवाल है। वो वी हैपन टू बी लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ पे कि इन सर्टिफिकेट्स की अभी भी अहमियत है, इन सर्टिफिकेट्स की, ये जो जियोग्राफिकल बॉर्डर्स हैं इनकी अहमियत है, एंड वी हैव टू लिव बाय द रूल्स, राइट? तो उनके रूल्स के लिए मैंने तो एक ही चीज तय किया। तो मैंने ये देखा कि जो NIOS है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, वो सबसे, वो 10वीं क्लास में जाइए, 10वीं तक आप अपना करिकुलम फॉलो करिए, आप जैसा चाहिए पढ़िए, मगर इतना जरूर पढ़ लेना कि वो 10वीं पास हो जाए। डिग्रीज के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं सर। मैं एक रिफ्रेश करके बुक है जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO ने लिखी, उन्होंने IIT नहीं गए, सुंदर पिचाई IIT गए, मगर सबको IIT जाने की जरूरत नहीं है ना सर। तो वो डिग्रीज मैटर्स नहीं करते, काम मैटर करता है। तो आपको यहाँ पे डिग्री चाहिए, आप NIOS में 10वीं का सर्टिफिकेट लो, कॉलेज जाओ अगर जाना है तो, नहीं है तो बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस हैं। एक मालविका जोशी करके एक लेडी थी, आई गॉट दिस इंस्पिरेशन फ्रॉम हर बेसिकली। उनकी बेटी है, पूना में रहती हैं, इट इज अ लॉन्ग ओल्ड स्टोरी। उन्होंने होम स्कूलिंग की, और एक टैड का शो हुआ था, उसमें शाहरुख खान के साथ उनको भी बुलाया गया था, उन्होंने बात अपनी कही थी, मैंने वो बड़े ध्यान से सुनी। उस वक्त मेरा बेटा स्कूल जा रहा था, आई हैड नो इंटेंशन ऑफ गोइंग फॉर होम स्कूलिंग। उनकी बेटी ने बिना होम स्कूलिंग किया, उसके बाद में उनको जाना था कॉलेज, IIT की परीक्षा के लिए उनको नहीं देने दिया गया क्योंकि शी डिड नॉट कंप्लीट हर 12th। बट यू नो व्हाट हैपेंड, MIT in USA they took her in because she topped Indian जो इंटरनेशनल ओलंपियाड था रोबोटिक्स का या कंप्यूटर्स का, साइबर का, उसमें वो 3rd थी वो लड़की। उसको सीधे MIT ने अपने खर्चे पे, स्कॉलरशिप पे, दे टुक हर टू MIT। सर अभी हम, सौरभ जी, अभी हम
आज बैठे, हम 20 साल बाद बात कर रहे हैं, ये लड़का अभी 8 साल का है, 12 साल बाद ये 20 साल का होगा कॉलेज जाने के लिए, 15 साल में ये 10th करेगा। हम 15 साल बाद सिचुएशंस अलग होंगी, अभी बहुत चीजें बदल रही हैं, और नहीं होंगी तो मत हो, हम NIOS करेंगे, कॉलेज चले जाएंगे, क्या मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं। 10वीं तक आप अपनी पढ़ाई करिए, उसके बाद अगर ये सोसाइटी अपने रंग ढंग रूप नहीं बदलती है, कोई बात नहीं, दे स्टिल इंसिस्ट कि आपको कॉलेज जाना, ठीक है, मैं कॉलेज चला जाऊंगा। और दूसरी बात, वो डिसीजन मैं नहीं लूंगा, आई विल मेक माई सन सो कैपेबल, सो सेल्फ डायरेक्टेड पर्सन कि वो 10वीं में होगा तो वो खुद तय करेगा कि मैं कॉलेज जाऊं या नहीं जाऊं, वो खुद तय करेगा, मुझे नहीं करना है। मेरे को इसको इस काबिल बनाना है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके। 10वीं में जाएगा, he would have two options, either go the NIOS way or skip the NIOS even। तो मेरे हिसाब से NIOS करिए, उसके बाद में कॉलेज के सारे रास्ते खुले हैं, आप IIT में जा सकते हैं, आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है आज की स्थिति में। मगर 10 साल बाद ये सिचुएशन चेंज होगी सौरभ, डेफिनेटली चेंज होगी, द वे होम स्कूलिंग कम्युनिटी इज ग्रोइंग। राइट। और अभी आते हैं जो आपका इंटरेस्ट वाला फील्ड है, वो है मैथ्स और साइंस। तो कैसे आपका ये इंटरेस्ट ग्रो किया इस चीज में कि मुझे एक ऐसा लर्निंग स्पेस बनाना है, एक DIY स्पेस बनाना है जहाँ पे बच्चे खुद ब खुद सीखेंगे, जानेंगे, और कैसे आपने ये जो आप मैथ्स को लेके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, साइंस को लेके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसमें आपका लगाव कैसे धीरे धीरे चालू हुआ, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, सबसे बड़ी, जब यही आपने जो चैलेंज किया कि आगे बच्चे कॉलेज कैसे जाएंगे, आई एम वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय अनस्कूलिंग फिलॉसफी। तो अनस्कूलिंग में ये है कि यू डोंट डायरेक्ट द लर्निंग ऑफ योर चाइल्ड, ही विल डायरेक्ट ऑन हिज ओन, उसको क्या सीखना है, क्या पढ़ना है, क्या किस चीज में उसका इंटरेस्ट है, लेट द नेचुरल लर्निंग टेक प्लेस। वी डोंट बाय करिकुलम इन अनस्कूलिंग। होम स्कूलिंग वाले जो हैं उनको धीरे धीरे पता लगेगा किस तरह का अनस्कूलिंग फिलॉसफी है, मगर being Indian, the way I am raised, the way the field that I am working in, I had my own apprehensions। सभी को होता है, तो मैंने एक फिलॉसफी बनाई अपनी खुद की, जो मुझे बाद में पता लगा कि बहुत लोगों ने किया हुआ है, ये अनस्कूलिंग विद मैथ। आप हंसेंगे, कहते हैं ये क्या बात हुई, अनस्कूलिंग भी कर रहे हो मगर मैथ भी पढ़ा रहे हो। तो ये मेरी एक समझ थी कि मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है जो कि हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसको। तो जो मेरी समझ थी, जितना मैं उस वक्त जानता था, उस हिसाब से मैंने शुरू किया। तो मैंने अनस्कूलिंग किया, आई गेव माई सन ऑल द फ्रीडम। उनको सोशल साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ही हैज नो इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, ही हैज नो इंटरेस्ट इन लैंग्वेजेस, ही हैज इंटरेस्ट ओनली इन साइंस, बिकॉज मे बी जो मेरा फील्ड है, जो मैं काम करता हूँ, उसमें उसके चारों तरफ साइंस है, चारों तरफ चीजें हो रही हैं। In my business we make machines, we make many things, so he sees me doing things by hand, तो उसको हाथ से काम करने में इंटरेस्ट आया। अब मैथमेटिक्स के बगैर आप काम नहीं कर सकते, मैथमेटिक्स के बगैर आप साइंस नहीं कर सकते। तो आई डिड नॉट टीच हिम साइंस। तो मैं सबको यही कहता हूँ, सबसे पहले आप मैथमेटिक्स को पकड़ के रखो, बाकी चीजों को आप बच्चे पे छोड़ दीजिए। जब 10वीं में NIOS में आएगा बच्चा, he would be well versed in history because he is studying newspapers every day. He would be interested in other subjects। हिंदी वो सीख ही लेगा, इंग्लिश वो सीख ही लेगा। बचा क्या उसमें सर, केवल इंग्लिश, वो जो मैथमेटिक्स है वो बचता है। मैथमेटिक्स इज द बेसिस ऑफ साइंस। अब मैथमेटिक्स सीख लिया, अब आप समझिए हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, वी कैन एज वेल कैलकुलेट स्पीड, वो तो साइंस हो गया ना। हम ग्रेविटेशनल पुल कैलकुलेट करते हैं, वो भी साइंस हो गया। तो साइंस और मैथमेटिक्स तो साथ साथ चल सकते हैं। तो इसलिए मैथमेटिक्स को मैंने पकड़ के रखा। अब एक इशू है कि क्यों मैंने मैथमेटिक्स पे एक्सपेरिमेंट्स किए। इसकी एक बड़ी वजह है, मेरा बेटा, जब मैंने अनस्कूलिंग अप्रोच किया तो सीधी सी सिद्धांत है कि बिठा के बात नहीं करनी है। आई कैन नॉट डिक्लेयर हाफ एन आवर फॉर स्टडी टाइम, कम ऑन हाफ एन आवर, घंटे बज गए, चलो बैठो सब पढ़ना ही पढ़ना चालू। नो वे, इट इज नॉट द वे टू टीच एनी किड। ये मेरी हमेशा से फिलॉसफी रही है कि यू कैन नॉट टीच एनीबॉडी, द लर्नर हैज टू लर्न। आप कितने भी बड़े हों, आप कितने भी जानते हो, आप किसी भी बच्चे को या किसी भी एडल्ट को सिखा नहीं सकते, उनको खुद सीखना होगा। तो लर्नर इज द वन हु एब्जॉर्ब्स नॉलेज। तो मैंने इनको एनकरेज किया कि आप खुद पढ़ें। तो उसके लिए कैसे एनकरेज करें सर, वो 8 साल का बच्चा, उसका तो इंटरेस्ट खेलने में होगा ना, वो क्यों बैठे आपके साथ, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है।
उसका इंटरेस्ट अपने लेकर के बैठे हैं, खेल रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो क्यों इंटरेस्ट ले आप में? तो फिर क्या करें? फिर हमें एक इनोवेटिव अप्रोच लेना होगा. वी हैव टू बी क्रिएटिव विद आवर अप्रोच विदाउट इंटरफियरिंग इन हिज नेचुरल प्रोसेस या विदाउट फोर्सिंग हिम. मुझे सबसे बड़ी शिकायत है फोर्स करने से. किसी भी बच्चे को आप फोर्स से पढ़ाएंगे, आधा दिमाग उसका शट डाउन हो जाएगा. सो व्हाट आई डिड, आई क्रिएटेड दीज amazing things with mathematics. I created these amazing experiments or amazing thoughts with mathematics. He does not want to sit, fine with me. Take a coin, start tossing it. Let us discuss probability. तो मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे कि उनका इंटरेस्ट खुद मैथमेटिक्स में आ गया और उससे बैठने की जरूरत ना पड़े. जिसको वो बैठना नहीं चाहता, कोई बात नहीं, हम कुछ ऐसी बात करेंगे जिसमें मैथमेटिक्स की जरूरत आएगी और फिर हम उस पर बिल्ड करेंगे आगे. जैसे किसी को हमें प्रोबेबिलिटी सिखानी है, आपको उससे प्रोबेबिलिटी की किताब खोलने की जरूरत नहीं है. तो मैंने एक्सपेरिमेंट ऐसे किए कि जिससे 8 साल का बच्चा हायर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स समझ सके. अब हायर लेवल, अगर मैं उससे कहूंगा आज हमें प्लस माइनस करने, तो वो 2 साल का बच्चा वो दूसरे ग्रेड की बात सोचेगा, वो उससे आगे नहीं सोचेगा. तो मगर मेरा समझना यह है कि जो इंटेलिजेंस है वो 2 तरह से. एक है फ्लूइड इंटेलिजेंस. फ्लूइड इंटेलिजेंस ऐसी है, इट कैन फ्लो इनटू एनीथिंग. हमारी माँ एक कहानी सुनाती थी कि एक बच्चा था छोटा, वो एक साधु बाबा के पास गया. उसने, हमारे यहाँ जब आग जलाते हैं चूल्हे में तो आग चाहिए होती है गांव में, दूसरे से आग लेके आते हैं, अपना चूल्हा जला लेते हैं, पुरानी बात कर रहा हूँ. तो जब वो साधु के पास गई तो साधु ने पूछा, बेटा तेरे पास तो कोई बर्तन तो लाई नहीं, मैं तेरे को कोयला जलता हुआ दूं तो किसमें दूं? नाउ सी द इंटेलिजेंस. हम इंटेलिजेंस किताबों से नहीं सीखते, इट इज फ्लूइड इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस. उसने थोड़ी सी राख ली, हाथ में रखी, उसने कहा बाबा इस पे रख दो जलता हुआ कोयला. अपने हाथ पे, नंगे हाथ पे उसने राख रखी, राख के ऊपर कोयला रखा, घर गई, अपने घर का चूल्हा जलाया. टेल मी, क्या उसको किताब पढ़ने की जरूरत है? नहीं. हमें ऐसे एक्सपेरिमेंट करने हैं बच्चों के साथ जिससे वो हम जो सिखा रहे हैं वो जाके अपनी जिंदगी में ले जाएं. हम उसको ऐसा मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल दें कि वो सब कुछ ड्रॉप कर दे एंड से आई वांट टू लर्न दिस. अब कैसे वो एग्जाम्पल्स आए, उसके लिए हमें खुद पढ़ना होगा. सर मैं तो भूल गया, इंजीनियरिंग करी थी तब से, कितने समय पहले किया है. तो आई सेट विद द बुक्स, आई रेड की क्या क्या चीजें हैं जो कि मैं एग्जिस्टिंग नॉलेज सेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. आप किसी को भी क्यूरियस कर सकते हैं. यू कैन अमेज एनीबडी बिकॉज यू आर बिग. आप तो 50 साल के हो, आप तो खड़े हो गए बच्चे के सामने तो बच्चा वो डर जाएगा, वो तो अमेज हो जाएगा आप जो चीजें बता सकते हो उसको. मगर उस अमेजमेंट का क्या फायदा है सर जब उसको बच्चा यूज नहीं कर सकता. तो क्यूरियोसिटी जो है, एक राइटर है, उन्होंने इस पे एक पूरी बुक लिखी है, उसमें 2 तरह की क्यूरियोसिटी बताई है. एक क्यूरियोसिटी वो है जिससे आप अमेज हो जाते हैं मगर वो किसी काम नहीं आती. यू आर जस्ट शॉक्ड. इट इज काइंड ऑफ रॉन्ग क्यूरियोसिटी, बैड क्यूरियोसिटी है वो. जैसे आप किसी नेबर के बारे में जानना चाहते हैं, किसी ऐसी चीज जिसको कि हम समझ नहीं सकते. हम इलॉन मस्क के स्पेस प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं. इट डजंट मेक एनी सेंस टू अस. वी आर जस्ट क्यूरियस, सुना, बैठ गए. अब उसके बाद दूसरी क्यूरियोसिटी ऐसी है जिसमें कि यू आर क्यूरियस अबाउट समथिंग बट देयर इज अ सर्टेन नॉलेज सेट यू ऑलरेडी हैव इन यू. उस नॉलेज सेट को अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं then I can answer that curiosity. तो हमें बच्चों को ऐसे सवाल देने हैं जिसमें वो अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज सेट का इस्तेमाल कर सकें. अगर उसको मैथमेटिक्स में एडिशंस आते हैं तो उसको ऐसा क्वेश्चन दें जो एडिशन को यूज करते हुए आंसर कर सके और जिंदगी में इस्तेमाल कर सके. क्या ऐसा है? इसका एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं. एक किसी भी बच्चे से कहो, अच्छा आप एक काम करो बेटा, कैन यू कुक अप नंबर्स ले लें. हमने कहा नंबर्स क्या हुआ, चलो ऐसा करते हैं. अब ये आइडिया मेरा नहीं है सौरभ, मेरे पास कोई आइडिया अपना नहीं है. मैंने सारे पढ़ के इधर से उधर से सीखे. आई एम ए सेल्फ लर्नर, मैं सब जगह से सीखा और मैं सबको बताता हूँ ये ओपनली, जिससे वो लोग डरे नहीं कि यार ये तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, इस जैसा तो हम बन नहीं सकते. ये मैं अपने बच्चे को भी नहीं बताता. मैं बच्चे को बताता हूँ कि मैंने ये यहाँ से सीखा, तू भी सीख ले, शायद तुम बेहतर सीख सको. तो ये आइडिया, ये विकिपीडिया में एक आर्टिकल है, बैनफोर्ड नंबर्स. उन्होंने क्या किया, दुनिया की सारी टॉल बिल्डिंग्स हैं, उसकी हाइट लिखी एक जगह. समझिए हम एक हाइट लिखते हैं तो उस हाइट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएंगे.
डिजिट्स तो आएंगी ना सब, 1 2 3 4 5 6 7, उन सारे में से कैन यू से कि कौन सी डिजिट सबसे ज्यादा आएगी, 1 सबसे ज्यादा आएगी, 2 सबसे ज्यादा आएगी, 9 सबसे ज्यादा आएगी, कौन सी सबसे ज्यादा आएगी? अब ये सवाल है, एक बच्चे से सवाल है जो ग्रेड 1 में है सौरभ, छोड़िए 10वीं, और ये बैनफोर्ड लॉ ये कॉलेज में पढ़ते हैं। मैं बच्चे से ये पूछ रहा हूं कि ऐसे अगर 10 नंबर लूं, आपसे मैंने कहा एक 5 डिजिट का नंबर बोलो, मैंने लिख दिया, आपकी मेड से कहा उससे बोलो 5 डिजिट का नंबर, आपके पापा से बोलो लिखवाओ 5 नंबर, अपनी माँ से बोलो, अपनी बहन से बोलो, अपने पड़ोसी से बोलो, आपके पास 50 नंबर हो गए। मुझे सिर्फ एक बात बताओ, इस 50 नंबर में 1 से लेकर 9 तक कौन सी डिजिट सबसे ज्यादा बार आएगी? द किड इज क्यूरियस। वो 1 से 9 तक तो जानता है ना सौरभ, जानता है, 1 2 3 तो जानता है। अब वो ये कह रहा है ये नंबर कौन सा सबसे ज्यादा आएगा? वो तो बोलेगा मेरा फेवरेट 7 है, सबसे 7 सबसे ज्यादा आएगा। चल बेटा लिख, मार्क कर गोले। अब वो भाई साहब बैठा रहेगा आधा घंटे, सबको मार्क करेगा, एंड ही वुड फाइंड आउट कि इट इज नंबर 1 दैट अपीयर्स मोस्ट। डोंट टेल हिम कि दिस इज बैनफोर्ड्स लॉ, टेल हिम दैट इट इज योर लॉ दैट यू हैव डिस्कवर्ड। वो कहेगा हाँ आई डिस्कवर्ड दिस, सो दिस इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज डिस्कवरिंग पैटर्न्स, और डिस्कवरिंग नॉट द पैटर्न्स जो दूसरे ने तुम्हें ढूंढ के दिए हैं, जो तुम्हारी आंखें देख रही हैं वो पैटर्न है तुम्हारे लिए। द नॉलेज इज क्रिएटेड बाय द लर्नर, हम उसे नॉलेज नहीं दे रहे। अब वो बैठेगा जिस दिन उस 50 नंबर को या 5 नंबर को लेकर के, वो ये पता लगाएगा कि नंबर 1 अपीयर्स मोस्ट उन सेट ऑफ डिजिट्स में। तो ऐसे ही हमने जो हाइट ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग्स हैं उनकी पूरी हाइट ले लो, इट इज अ रैंडम नंबर राइट, उनमें नंबर 1 सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि बैनफोर्ड्स लॉ कहता है कि नंबर 1 30% ऑफ द टाइम आएगा। दिस इज हाउ दे डिटेक्ट फ्रॉड्स। जब कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है ना सौरभ, अनशन नंबर डाल दिए उसमें, 1 मिनट में पता लगा लेते हैं साइंटिस्ट की ये कुकड नंबर्स हैं, क्योंकि उसमें नंबर 1 ओनली 10% ऑफ द टाइम आ रहा है। कहेगा दिस इज ए फ्रॉड्यूलेंट सेट ऑफ नंबर्स। मगर ये उस बच्चे ने पता किया जिसको कि वो ग्रेड 1 में है। क्या ये मैथमेटिक्स नहीं है? ये मैथमेटिक्स है, और ये यूज है फ्लूइड इंटेलिजेंस का और एक ऐसी क्यूरियोसिटी का जो उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज सेट का इस्तेमाल करता है। तो ये 2 चीजें हैं, मेकिंग देम क्यूरियस जिसमें कि वो एग्जिस्टिंग नॉलेज सेट का इस्तेमाल कर सकें, एंड मेक देम क्यूरियस अबाउट बिग थिंग्स, इतनी बड़ी कि वो सीधे दे टेक अ लीप टू द नेक्स्ट लेवल। प्रोबेबिलिटी सिखानी है बच्चों को, प्रोबेबिलिटी तो जिंदगी में इस्तेमाल होती है ना। मैं उसको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन क्यों सिखाऊं कि 8 डिजिट के नंबर को 4 डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? अरे यार देख, कॉइन लो, उछालो जरा उसको, एक कॉइन दे रहा हूं, उसके 2 फेस हैं, हेड और टेल, 10 बार उछाल, 20 बार उछाल, लिखता जा। यहाँ पे एक बार उछाला, हेड आया, लिख दिया, दूसरी बार उछाला, टेल आया, लिख दिया, हेड टेल 5 मिनट बाद परेशान हो जाएगा वो बच्चा, कहेगा पापा ये तो 2 ही आते हैं बस। Because you have 2 faces, so you have 2 probabilities. Now do one thing. 2 कॉइन लो और दोनों को उछालो और फिर लिखो कि क्या आता है। My goodness, something different. अब 3 कॉइन लो और तीनों में क्या क्या आया उसको लिखना शुरू करो। This is mathematics. तो क्या कोई बच्चा खेल में और पढ़ाई में फर्क कर पाएगा? और ये सब जो एक्सरसाइजेज हैं वो उनके एग्जिस्टिंग नॉलेज सेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, उनको नॉलेज देते हैं पहले कि तुम पहले इसे पढ़ो, उसके बाद में आगे इस्तेमाल होगा इसका कुछ। नो, उनको ऐसी चीज दो जिससे वो अभी के अभी इस्तेमाल कर सके। एक होता है मैं जैसे एडिशन सिखाना है सर, तो एडिशन में हम बच्चों को कहते हैं एक काम करो, तुम एडिशन करना शुरू करो, 50 को 55 से जोड़ो, 55 को 60 से जोड़ो, बताओ क्या आया। मैं उनको कहता हूं भगवान जी पहले आप इस चीज में घुसे, मैं एक बार आपका जो आपने ये स्पेस बनाया है इसको अगर आप थोड़ा सा हमें दिखा सकें कि आपने कितना एक इंटरेस्टिंग स्पेस बना के रखा है, और ये वही स्पेस है जहां से आप बात कर रहे हैं अभी। हाँ जी, ये असल में सौरभ ये हमारा इंटरेस्ट, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये आया जब मैंने मेरे बच्चे के साथ काम शुरू किया, सो रिजल्ट्स बड़े अच्छे आए, क्योंकि स्कूल को बाहर निकाल दिया ना सौरभ, हमने स्कूल को बाहर निकाल दिया। इट इज अ चाइल्ड लेड लर्निंग, उसे खुद इंटरेस्ट है, नाउ ही वांट्स टू नो। पर जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आता है टीवी पे, लिंक लॉक 1 बिलियन कॉम्बिनेशन, 1 घंटे बजती है, 1 बिलियन कैसे हो सकते हैं उन 5 लॉक से, देन वी टॉक अबाउट दैट। तो ये चाइल्ड लेड लर्निंग जब बढ़नी शुरू हुई तो दूसरे लोग हमारे पास आए। फिर ये कोविड आया, जब ये कोविड आया तो मुझे लगा कि ये जो चीज है ये दूसरे
बच्चों के पास जानी चाहिए। तो हमने क्या किया, एक ऐसा स्पेस क्रिएट किया जहां पे दिस लर्निंग कैन बी शेयर्ड विद अदर्स। तो जो मॉडल्स मैंने बनाए हैं वो मॉडल्स हम दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकें इन अ सस्टेनेबल मैनर, क्योंकि वो जो शेयर कर रहे हैं तो फिर इट हैज टू ग्रो ऑल्सो। ऐसा नहीं कि मैंने 5 मॉडल बनाए तो 5 रहे तो फिर ये कहानी आगे बढ़ेगी नहीं। तो मैंने उसके लिए एक सस्टेनेबल मॉडल बनाया। हमने एक रेंटिंग का सब्सक्रिप्शन बेस्ड कि आप एक बहुत छोटा 30 दिरहम्स दैट इज सम 600 रुपीज आप देंगे तो आप इसको रेंट पे ले सकते हैं और आप उससे यूज करिए और अगले दिन वापस। आपको बनाने की जरूरत नहीं है हाथ से, यहाँ पे बने बनाए मॉडल्स रखें। तो ऐसा हमने एक स्पेस क्रिएट किया यहाँ पे जिसमें कि लोग होम स्कूलर्स, क्योंकि वो उनको तो बच्चों को क्यूरियस करना है ना, अब कैसे करें वो क्यूरियस, दे डोंट हैव मीन्स टू डू इट, दे डोंट हैव मीन्स छोड़िए, दे डोंट हैव इमेजिनेशन एंड टाइम टू डू इट। व्हेन दे सी मी डूइंग इट तो वो आते हैं, वो कहते हैं आप हमारी मदद करिए। तो मैंने फिर एक ऐसा स्पेस बनाया जिसमें कि वो इन चीजों को अपने यूज में लेकर के वापस दे सकते हैं, क्योंकि बनाना या खरीदना मुश्किल है। इससे मैं यही चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़े, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे फायदा उठा सकें। तो मैं आपको उसमें ये दिखाता हूं। अभी आई विल स्विच द कैमरा एंड लेट अस सी कि इफ one more thing Bhagwan ji, we are getting request for English conversation, so जितना ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि I think there are people who are not well versed with Hindi. Sure. So if we can do a maximum part in English, it will be better. Yeah. You are comfortable in English? I would stick to English more. Yeah, that is better. Yeah. Thanks for reminding me. I will switch the camera and Saurav, ये है एक, can you switch on the light अभी? Can you switch on the light? This is something anybody can create in their home. It is a Pascal triangle. This is something that even grade 1 kid, Saurav, केवल grade 1 में we can teach them many things. This is such a beautiful thing. See here is 1, then there is 1, you add 1 comes 2, it is like that. So I won't go into how it is made, but what all learning can happen here. See, this is a set of natural numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये एक खेल है। मैं खेल छोटा क्यों बनाऊं, मैं बड़ा बनाऊंगा। अभी देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 11 है, ये 11 के अभी कम हियर, ये जो है 11 के एक्सपोनेंट्स हैं। 11 raised to the power 0, 11 raised to the power 0, 1. Then what is this? This one 11 raised to the power 1, 11 raised to the power 3, 121. 2 square 121. 121. Then this is 11 raised to the power 4. Yes. Then there is Fibonacci pattern here and there are many lessons to be had. अभी ये एक चीज, ये बनाने की जरूरत नहीं है, मेरे से लेके जाओ और अपना इस्तेमाल करिए आप। Now you see here, this is the magic square. अभी can you hold it for Ben? सौरभ ये देखिए, ये एक स्क्वायर है, इसमें ये नंबर्स हैं 25, 18, 51, 82. If you add them up, आप बच्चे को कहो ऐसा करो बेटा, तुम इनको जरा जोड़ना, 25 को, 18 को, 51 को, 82 को। आप उसे अगर एक्सरसाइज देंगे ना एडिशन की, ही वुड बी पिस्ड ऑफ। वो कहेगा यार मैं परेशान हो गया, मैं नहीं करना चाहता। बट उसे ये दीजिए 25, 18, 51, 82 को जोड़ो। एक बार जोड़ेगा उसको ये 176 मिलेगा। इसी को ही ऐसे जोड़िए 176 मिलेगा। इसको आप ऐसे जोड़िए 176 मिलेगा, ऐसे जोड़िए 176 मिलेगा, ऐसे जोड़िए 176 मिलेगा। बच्चा कहेगा ये कौन सा मजाक है और ये कैसे हो सकता है? हाउ कैन अ सेट ऑफ नंबर्स बी अरेंज लाइक दैट? एंड आई से दिस इज ए एक्सपेरिमेंट इन एडिशन। ये एक्सरसाइज है। वो छोड़िए आप, अगर आप इसको मिरर में देखें, रिवर्स इट, अभी टर्न इट अराउंड, अगर आप इसे मिरर में देखें तो जो आएगा सौरभ, ये पूरा ये सब 176 निकलेगा। इमेजिन द शॉक ऑफ अ बॉय 8 year old। वो कहेगा क्या हो सकता है, ये कैसे बन जाएगा? इसको मैंने उल्टा कर दिया, अर्लियर इट वाज 85, नाउ इट इज 58। यू कैन रेंट इट फ्रॉम मी, बट व्हाई रेंट? आप खुद बनाइए ना, एक पेपर पे खुद बना लो ऐसा। इसी तरह से ये है, देखिए हमने ये एक छोटा सा मॉडल है, ये ग्रेविटी के लिए है।
अब बच्चों को जैसे साइंस सिखाना है, तो ये एक सिंपल मॉडल है। अब इसमें आप यहां पे रखें तो देखिए ये इट इज रोलिंग अप। हाउ कैन अ सिलेंडर रोल अप? नॉट पॉसिबल। मैं आपको दीदी के लिखा। अभी जैसे हमने ये बॉल रखी, नाउ यू सी द बॉल इज रोलिंग अप। ये कैसे हो सकता है? बच्चे को अब बात करिए उससे ग्रेविटी से, उसके बाद ग्रेविटी की बात करें। जो स्कूलों में हम सिखा रहे हैं उनको कि जो चीजें होती हैं ज्योमेट्रिकल शेप, स्फीयर होता है, ओके, क्यूब होता है, फाइन। बच्चों को सिखाया जाता है कि प्रिज्म होता है, सिलेंडर होता है, कोन होता है, फाइन। लेकिन अगर मैं उनको इससे आगे की दुनिया दिखा दूं तो क्या होगा? अगर मैं उनसे कहूं कि ये एक शेप होती है, they would be shocked। वो कहेंगे ये कौन सी शेप है? सौरभ आप देख पा रहे हैं? यस यस यस। ओके, अगर ये देखें तो वो देखिए पैटर्न, ये सारे पेंटागन्स हैं और ये एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज किए गए इन अ 3D शेप। मैं बच्चों को ट्रायंगल क्यों सिखाऊं? ट्रायंगल्स, पेंटागन सिखाने से पहले मैं उनको ये 3D की शेप ना दिखाऊं जिससे वो ये देखें कि ये पेंटागन का इस्तेमाल इतना ब्यूटीफुली किया जा सकता है। अगेन द एग्जिस्टिंग सेट ऑफ नॉलेज यूज करते हुए वी आर मेकिंग देम क्यूरियस इन बिगर थिंग्स। उनको पेंटागन पता है, अब उन्हें यह पता है कि अब इसके बारे में आगे कैसे सीख सकते हैं। ये सेम वे यू कैन अरेंज ट्रायंगल्स। ये इकोसाहेड्रॉन, ये असल में 5 सॉलिड्स हैं जो प्लेटो ने डिस्कवर किए थे। वी क्रेडिट हिम विद दिस इज ऑक्टाहेड्रॉन। ये ट्रायंगल्स हैं जो इस और 5 से ज्यादा तरह से इसको अरेंज किया ही नहीं जा सकता। अब ये बताइए कि ये कैसे हो सकता है? बच्चा कहेगा मुझे ट्रायंगल सीखना है, तो मैं ट्रायंगल सिखाने से पहले उसको अगर इसके सामने ये रखा जाए तो ही वुड नॉट बी क्यूरियस ओनली अबाउट प्लेन ज्योमेट्री, ही वुड बी क्यूरियस अबाउट सॉलिड ज्योमेट्री। देन वी टॉक अबाउट ट्रायंगल्स। तब हम इसको नापेंगे कि ये ट्रायंगल इतना बड़ा कितना है, ये इक्वल है कि नहीं, इनका एंगल क्या है, वी कैन टॉक। लेकिन पहले उनको एप्लीकेशन दिखाओ, उनको एप्लीकेशन पहले दिखाओ। अगर हम उनको हेलिक्स दिखाना चाहते हैं तो दिस इज द हेलिक्स। मगर दूसरी चीजें आपको जब ट्रायंगल और पेंटागन के बारे में बात करें तो उनको ऐसी शेप्स देखने को मिले। लेकिन ये शेप्स स्कूल वाले या दूसरे लोग क्यों दिखाएंगे, क्यों कोशिश करेंगे? हमारे पास वक्त कम है। अगर हम उन बच्चों को ये दिखाएंगे तो वो आगे इंटरेस्ट लेंगे बड़ी चीजों में कि ये कैसे हो सकता है। असल में अब मैं अपने बच्चे को सिखाना चाहता हूं कि पाई क्या होता है। आई बिल्ड दिस वन। ये उसके हमेशा सामने है और ये पाई की वैल्यू सामने है, हमेशा टेबल पे आपके सामने रखी हुई है। वन डे ही विल गेट क्यूरियस, कहेगा पाई क्या होता है ये, फिर वो पाई के बारे में बात करेंगे। ऐसे हमें ऐसे एग्जांपल्स ढूंढने हैं जिनसे कि हम इस्तेमाल कर सकें, उनके लिए बड़ी समझ ला सकें उनके सामने। राइट। एग्जिस्टिंग नॉलेज सेट से जो उनको आता है। तो and the accelerated maths and science, this is what is accelerated maths and science. एक्सीलरेशन तभी हो सकता है जब उनके सामने बड़ी चीजें रखी जाएंगी, उनके सामने बड़ी चीजें होंगी। Okay, so we might have lost him, but he will get back because he was using a mobile phone. So just wait for some time. So in between, if you have any question related to what you are hearing, if you have anything to ask Bhagwan Sarup ji, you can just type in the comment section that you have so and so question. I can see them on my screen. I can put it up and we can discuss that as well. So he is back. Sorry, yes. सॉरी गड़बड़ हो गई उसमें। अच्छा, असल में एक्सेलरेशन की मैं बात करता हूं, वो एक्सेलरेशन ऐसा नहीं कर सकते कि हम बच्चों को ऐसी चीज दे दें जिससे कि वो हैंडल ही नहीं कर सकते। देखिए, मेरा हमेशा वही एक कीवर्ड याद रखिए, एग्जिस्टिंग नॉलेज सेट। अगर किसी को एडिशन आता है और उसको आप मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करें, ही इज गोइंग नेक्स्ट स्टेज, राइट? इट इज एक्सेलरेटेड लर्निंग टेकिंग प्लेस। बट जो भी मल्टीप्लिकेशन है वो
एडिशन के बेसिस पे होना चाहिए. इट शुड यूज द एग्जिस्टिंग नॉलेज सेट बट लीव सम रूम फॉर चैलेंज. लीव सम रूम फॉर चैलेंज और उसके एक्सपेरिमेंट के लिए. तो वो क्या करेगा, एडिशन से मल्टीप्लिकेशन पे जाएगा. मल्टीप्लिकेशन को यूज करते हुए आप आगे भेजिए. आपको कुछ उसके लिए छोड़ना पड़ेगा आपको. अब एक्सेलरेशन होगा, उसके एग्जिस्टिंग नॉलेज सेट को इस्तेमाल करिए और बड़ा रखिए. आप उसे मल्टीप्लिकेशन तो जानते हैं ना सारे बच्चे ग्रेड 2 के, ठीक है. अगर जब मल्टीप्लिकेशन जानते हैं तो आप अपना इलेक्ट्रिकल हाउस का इलेक्ट्रिसिटी का बिल उठाइए, हाउस की इलेक्ट्रिसिटी का बिल उठाइए और बैठिए. चलो मैं ये पता करता हूं कि हाउ मच एनर्जी पापा हैज स्पेंड, हाउ मच एनर्जी माँ हैज स्पेंड एंड हाउ मच एनर्जी यू हैव स्पेंड इन योर रूम. चलो अपना बल्ब निकालो, वहां से बल्ब निकाला, उस पर लिखा हुआ है वोल्टेज 250 और एम्पियर 0.5. चलो वाट कैलकुलेट हो गई, सब हो गया ना कैलकुलेशन. मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल हो गया. एक्सीलरेटेड लर्निंग हैज टेकन प्लेस नाउ. भाई साहब वो पूरे घर के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चेक करेगा, सबके किलोवाट की रेटिंग निकालेगा और किसने कितना खर्चा किया वो करेगा. कुछ नया सीखा उसने, उसके एग्जिस्टिंग नॉलेज सेट को इस्तेमाल करते हुए नई चीज सीखी उसने. मगर अगर मैं उससे कहूंगा बेटा 17 की टेबल याद कर ले, तेरे लिए काम आएगी, क्या करूं 17 का टेबल याद करके? बिकॉज इट इज बियॉन्ड हिम. उससे आगे की बात कर रहे हैं आप और उसमें पहले की नॉलेज का इस्तेमाल नहीं हो रहा है. और उसको सीख करके मैं कहां लेके जाऊं उसके सिवाय नंबर लाने के, या वो गोल्ड मार्क्स मिलेंगे ना मुझे. तो इस्तेमाल हो उस चीज का. आप उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखिए. आप कार में जा रहे हैं, आपकी सबकी कारों में आज का एवरेज स्पीड आती है लिखी हुई, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस और टाइम. इट इज अ सिंपल मल्टीप्लीकेशन. जिस आदमी बच्चे को एडिशन आता है मैं उसे मल्टीप्लिकेशन पे ले जाऊंगा, मल्टीप्लिकेशन से मैं मुझे डिस्टेंस, स्पीड और टाइम पे लेके जाऊंगा. द मोमेंट ही नोज कि मैं कैसे टाइम ऑफ अराइवल तय कर सकता हूं, वो ये पता लगेगा कि भगवान बैठा हुआ है दुबई में, मैं वहां कितने दूर में पहुंच सकता. पापा कैन यू फाइंड द डिस्टेंस टू दुबई फ्रॉम हियर? देन ही वुड गो ऑन इंटरनेट एंड फाइंड आउट व्हाट इज द डिस्टेंस or how long it will take to arrive at that particular point using simple multiplication. Always use the existing knowledge set of a learner, then build on it so that they get to use this in their practical life. Get them started on their self learning journey. Learn something, use it. Learn something, use it. When they use it, they say, they still lack something. When they find that they still lack something, they would go back and learn it more. So it is a cycle taking place now. You give them an application based on what they already know. So they would learn that, go in the life, experiment with it. Certain problems they would be able to solve, but other problems they cannot solve everything. They would definitely come across a situation where they need something more. They would come back to the learning process. It will be a closed loop. Then the acceleration is not in your hand, it is in the learner's hand. He would continue doing it. You cannot define time for it. You do it. You school kitna time jata hai? Only 8 hours, 6 hours, but this process is taking place 24 hours in his head. Exponential learning, exponential, not double, because now the play is his learning, life is his learning, the environment he lives in. The moment he sees that solid geometry is like that, while he is walking, he would see solid geometry everywhere. He would come back to you with questions because he is using his existing knowledge set, getting questions from life. Those questions will never be presented in his book, because book will talk only about addition, multiplication, and the madam will only talk about telling 17 table and complaining about it. But now he is using his existing knowledge set, going into the life, generating questions from life. He would say, okay, when I know distance to distance and arrival time, but the speed is varying. We exactly did not arrive at that particular time. What is this key? So he will go back and learn more about average speed, how the averages are done that way. So now we have to present them with something that they can handle. Right. And set them on a self-learning path, so the acceleration is in their own hand. You let them free, jane do. Let them learn on their own. I have a neighbor's son
when we were talking like this with my son, and he used to walk in, Saurav, you would be shocked what he would say. We are playing. One day we created an experiment. I am telling you this from my personal experience, and this is the general understanding of the kids. We made a carbon dioxide experiment. Carbon dioxide means we put vinegar and baking soda. We filled two balloons. One was with carbon dioxide, one was with air. And I gave them as footballs. You play. They found they are able to kick the carbon dioxide balloon very good because it is lying on the floor more. When he started talking with my son, his friend, he walks in and says, what are you doing? Why you are wasting time? It is playtime. And what you are doing is learning. I was shocked and I was kind of numbed. So this guy knows that school is for learning and outside school is nothing, no learning. We have to make that barrier break. Then accelerated learning will take place. Learning every time. This is what we have to do. Learning every time with everything that you come across. You pick up a LED bulb packet, there is a lot of learning onto it. Just reverse it, you would see energy ratings, you would see. We have to teach kids how to take questions from environment, not from the books. Then the accelerated learning, exponential learning. Now my son talks about piezoelectric. Today he was making a video on piezoelectric. I didn't teach him that. He is on a self-discovered path. He would go learn something from there, then he would come back, find out. And I don't interfere. And I simply provide him resources. So every person, get them started on self-learning. And tell them how to find questions from the real life. That's it. Self-learning will take place and accelerated. But be prepared to provide them resources, be prepared to bring them the whole world to them so they can pick their curiosity. Right. Some person may not be interested in painting, something else. So our job is to bring them these options, let them choose and don't force our opinion on them. So one question that was arising in my mind, in this kind of a setup where we provide a lot of resources, a lot of environment for natural learning, the involvement of parents increases to some fold. So if I consider that both the parents, like the mother and the father, both are working parents, in that case, is it too tough for them to do such kind of experiments? Or so what is the purpose basically? How much time? Saurav, we have to make the child in charge of his learning. I don't ask my son what to learn. I just present him opportunities. Now you see this. This is an equation here. This is called the most beautiful equation in mathematics. But it is just waiting there for him to discover. Now, when both parents are working, it is even more, we have more incentive to make the child a self-learner. It will take burden off you. It will take the burden off your head at all. You are not telling him or her what to learn, how to learn, where to learn from. Make them independent so that they can make their own choices, what they want to learn. Present them in life scenarios, like we are discussing about this speed distance. He would go back and learn on his own something. So we have more incentive, but the problem here is how do we let go? We don't let go of teaching. We want to teach kids. When you teach kids, then the problem arises. Then you need time. Now both parents are working. Who has time? So don't teach them. Don't teach them. Let them be free, and they can learn themselves. You present them with options. Whatever they get interested in, you give them this. John Holt has said, there is nothing worse than a talking teacher. For the biggest enemy of curiosity is a talking teacher. This is what he had written. I was shocked because when I read it first time, I couldn't fathom how deep it is. The biggest enemy of curiosity is talking teacher. If we don't tell them, how they would learn?
But this is the key. I learned it. I experimented with it so deep. When I am talking to my son, he would come up with something. Papa, how does the piezoelectric element work? I would stay quiet. I would say, what do you think about how it works? Have you seen it somewhere? I think I read that in Gaslighter it is there. Okay, so you have answered yourself. Go ahead, research more. So I am free. I am no burden. Even if I am working, my wife is working, everybody is working, he would get on his own self-learning discovery. We have to let go of teaching, then the questions of time and everything would stop. Resources, yes, you have to bring resources to him, you have to bring choices to them, but let them decide what they are interested in. And many a times, I was discussing it one of the threads, many a times we think that it is child's interest, but actually it is your own interest being reflected in their choices. You were interested in becoming an engineer, not your child, but you are presenting choices to him that, slightly give hints that I want you to become an engineer, I want you to become an engineer. So he adopts it, societal pressures. Now my son, he wants to be a DJ. He knows a lot about science, but he wants to become a DJ. And one person we met, he said, DJ क्या होता है यार, वो तो शादियों में पैसा फेंकते हैं, उसको उठाता है जमीन से. He said, fine, no problem. I don't care what you think about this. I love being DJ. I love being DJ. This is why. So next time if somebody asks him, if he is a little emotional type, he would say, no, I don't want to become DJ. I want to become something else. I want to become scientist, because he knows scientists command higher respect. Take this kind of societal pressure away from them. Accept your own failures. You will not need to teach your kids, so the time constraint will stop to matter, Saurav. You are working, right, or both parents are working, even better chance, better incentive to set the child on a way to learn himself. But it is a little difficult concept to grab. Yes. So basically, what we normally think is that when we think of alternative education, or maybe other than the school format, the parents need to involve themselves more. But yes, maybe at the initial stage they have to give some more time, but once it develops, I think it is totally the reverse. I mean, you have to dedicate less and less time, and the child becomes an independent learner. You just have to provide them resource from time to time. That's it, right? Perfect. This is exactly what is happening to me now. Right. You see, earlier I was more, and it is not time. It is inside it is a anxiety. My child is not learning, how he will learn, what he will do. Slowly that anxiety came down. Slowly. I trusted him that if I leave him alone with some equipment, he would figure out how it works. Yesterday we bought a printer, tank printer, HP 510. Costly equipment. I gave him, he came, he simply ripped the packet open, commissioned the whole thing on his own, inserting the cartridges, filling the cap, everything. My wife, she is of different, she was little concerned that maybe something gets damaged. But I said, hold on, he will do it himself. And now see, when my son sees that I am having that much confidence in him, he would take up bigger challenges. Then imagine when I can trust him with the equipment, the whole printer, he would set up everything, what he cannot do. And second, I am free to do whatever I like. Whether I have time, whether I am working or not, it stops to matter. Your time will keep reducing. Because playtime is the learning time. Learning time is the playtime. Right. And they would learn how to amuse themselves. Plato has said, the learning, if you want to bring learning to somebody, make it amusement. Right. If the learning is amusement, nothing like it, they would never bother you. They would never bother you. It pains me to see there is an advertisement running on TV when the COVID was going on. It was a Disney advertisement. In that, the kids are making nuisance about the house. They're jumping around here, there. And the parent says, okay, come, Disney TV. Now they are not troubling the kids, the parents anymore. They are just watching like automatons in front of TV. I hated that. If they are running around the house, you want to quiet them, put them in front of TV.
because parents need time. If parents need time, it is even more incentive to set your kid on a self-learning journey. One second, we have lost him. So he raised a very important point, which I also feel aligns with what we who are into alternative education goes just parallelly. Is what we need to give. We need to trust our child. We need to give them exposure. We need to trust them more than our own self. And once they see that, the confidence within the child automatically grows, and then he looks for new learning paths, and it happens very naturally. So, as Bhagwanji said in the earlier stage, also that learning happens very naturally. So, once we understand this thing, कि लर्निंग कोई किसी को दे नहीं सकता, कोई एनफोर्स नहीं कर सकता, कोई किसी को सिखा नहीं सकता. इट इज जस्ट दैट समथिंग हैपेंस वेरी नेचुरली, व्हिच वी हैव नेवर लर्नड. आई मीन इससे पहले वाले जनरेशंस में ऐसा हुआ नहीं है. सो इट बिकम्स अ वेरी टफ थिंग टू एक्सेप्ट, to relearn or maybe unlearn, and then give it back to our children. So yes, so please continue. This is what, see, we have to, the ultimate aim of education or whatever we are doing is to make the kids a functioning adult, right? And they would be presented with challenges that we have never seen. 20 years from now, we don't know what is going to happen. What is going to happen, you don't know. So if we don't know the questions, how can we tell them the answers now? Right. We have no way of telling them the answers. We can only give them a way of living, a way of living, a way of learning. And the way of learning is only one: learn yourself. Learn from life. What is the question? What troubles you? Go out and figure out how to solve it. If something is troubling you, I say the thing that troubles me most is why the computer does not accept a particular character as a file name. It troubles me. Then go out, find the answer for it. The kids will think somebody else will find the answer for them, and they would be a consumer. No, we need innovators, we need creators, and in order to do it, we need people who are self-starters, who are self-motivators, who are not dependent on teachers or special learning places or even their parents to teach them what to learn. You have met Ofer before. There is a video of Ofer on YouTube where he says we would lose 1 billion jobs by 2040. And then 1 billion workforce would join them. So there would be 2 billion people looking for jobs. Who will give them jobs? The resources are getting less and less and less and less. Water is becoming scarce and scarce and scarce. Glaciers are melting. Sea levels are rising. We are losing earth, agriculture land. The rivers are drying. Everything is happening. Resources are getting less. Population is going more. What we need now are solutions where we can do more with less. It is not my word. It is Ofer's word that I'm repeating here. We need people who can do more with less. And who can do this? Innovators. Right. We need innovators. Now innovators आएंगे कहां से? क्या किताबों से पैदा होंगे या स्कूल सिस्टम से पैदा होंगे? No way. School system would generate only consumers. Creators, you, us, and our homeschoolers, they can create more innovators and creators. But for that, we have to think laterally. Lateral thinking is we have to give freedom to our kids. Why? How can they come up with original thoughts if they are not free to think? Right. Otherwise, they will be reflection of what we are. I am an engineer. My son would be an engineer. But my son wants to become a DJ. Right. This is original thinking, I say. Let him learn whatever he wants about engineering. Let him learn whatever he wants about science. But if he wants to become a DJ, let him become a DJ. Right. Originally, now his choices will change. But we should not put societal pressures. That is our job, to keep them free of this. So that they don't get influenced by either our thoughts or our grandma's thoughts or our parents' thoughts or the society. Then they will come up with original thinking. And then this is the basic philosophy I follow.
and I request everybody, give it a thought. We would be needing more innovators in near future. Right, right. Who can Right. perform more with less, and the only people who will do is who have free thinking. True. Make your kids free, trust them. They are much more closer to nature than we are. We have stopped questioning ourselves, we have stopped questioning the governments, we have stopped questioning everything. Our questioning capability is questionable. Yes, yes, yes. Let them be a good person who can look for questions. We would need more people like that. So don't bind them with the books, that you will find only the questions in the books. Let them be free. They can find questions anywhere. We provide them resources to search for those questions. Right. So the questions need to come from within, not from the books. Outside the books, there is an environment we live in, then accelerated learning will take place. Otherwise, the learning will stop the moment the chapter is finished. Right. The learning will stop the moment the syllabus is finished. Why you want to bind them only to a book? True. Grade 2 student has finished his life's purpose when the grade 2 book is finished. But if the environment he lives in, that is the book, he is a lifelong learner. He would look anywhere. He would be confronted with questions. Throw the book in the bin. He would say, my book, I have finished it before, but now I am confronted with questions that cannot be answered in my 10 lifetimes. So I have to learn from the environment. I have to find answer for this, answer for this, answer for this. Now you meet anybody, they don't have questions at all because the questions are in the book. I know it all. They have an air around them. They know everything. Now the only challenge they find is in the video games. There they are confronted with situations that they cannot handle. So they come up with unique strategies. Why they go out, look for PUBG and all these games? Because they are not presented with challenges in life. So use their existing knowledge set, present them such a big questions, make life a video game. Take inspiration from video game manufacturer. This is what Seymour Papert said. People say that kids are bored in school, they fear school. No, forget it. No, school is boring for them. They can teach themselves anything. They teach themselves how to play this hard video games. Try playing it one day. You will know how difficult it is to play it. But they teach themselves. They can teach themselves anything. Only present them with challenges and present them with a way of thinking that how to look for questions, how to be persistent with your answers, finding the answers, observational skills, so they don't give up. When they look for some answer, they don't find it, they would feel low and they would give up. Then the parent has to come in, not to teach him, just so that they don't fall. Right. Yes. Make them believe in their choices like that. Sorry. Right. So before we end, we have few questions. So we will raise the questions, we will answer them, and we'll end today's session. It was overtime. I never looked at the clock, so it was so good hearing. You also noticed now. Yes. So let's have the first question. We have a first question from one of our members. The question is how to make education. Can you see the question also? I can. Yeah. So question? how to make education into amusement, as we are talking about amusement. My child just want to run away from studies. If he wants to run away, give them a place to run. And when he's tired of running around, put some hurdles in his way. And when he sees the hurdles, he would try to jump over it. And then we talk about something else while he's running. Don't make him sit and learn. My son, he doesn't want to sit and learn. So what I do, I jog with him. And you see, I use this opportunity to teach mental mathematics to my son. He would not sit with pencil and paper. I said, fine. Then if you don't want to sit with pencil and paper, then we have to do everything in your head. He said, fine with me, even better. So when I told him, okay, let us do 5 tables. So he would say, doubling of figures. Everything let him do in his head. So when he is running away, you also run with him.
it will do you a good in your health. And then while running, you ask questions, you talk about life, you talk about anything. The questions will come and the learning will happen there itself. Right. And there is one more thing that I have observed. Please let me know your feedback on this. That often we parents think that हमें ज़्यादा समझ है, हम ज़्यादा जानते हैं, हमें ज़्यादा पता है. But when we want the children to learn like a natural learner, we have to be like a child. We have to be like a children. We have to be like open to them. Yes, I don't know. If I know the answer, let's be in that way. Yeah, we don't know. Let's explore it together. So we have to be like a child. We have to be like him or her, so that they can connect more. Yes. I will tell you one thing. I would make a post about it. There is a story of Socrates, the great Socrates, and a slave boy. So Socrates' method of questioning, because I don't want to get into detail how it is done. All information is available on internet. You just, the keyword is Socrates methods. Socrates method or Socrates and the slave boy. If you look these two words, you would know. He says the learning is inside you. So Socrates never presents answers to his pupils. Never. He would ask you questions. So what do you think about it? So these are the three options. So what do you think? What do you think? Not what I think. What do you think? He would ask the learner to give him the answer. And ultimately he would say, look, you found the answer. So Socratic method of teaching, it is not teaching, it is helping learner discover the answer. It is a mental shift, a huge mental shift. For me, probably it was easier because I have done it before, because I am a mechanical engineer. I learned electronics totally. I taught myself how to do it. So for me, the shift might be easier. For others, it might be difficult. But one thing everybody knows, we are not closer to God. Our kids are closer to God. Our kids are closer to nature. Why they want to run around and play? Because they find learning useless. And it is useless. What we need for living life. Do we need mathematics for living life? We need decision making. It helps us decision making. It is just a tool. It is just a tool. Science is only a tool. So don't think that we know that science is important, science is beautiful. They have to find it beautiful. If they find it beautiful, they would learn about it. I find Mona Lisa beautiful. My son doesn't care about it. So why he would care learning about it? And don't think that we cannot live life without mathematics or science or this art form or this. It is up to you what you feel important. This is very rightly you said, because we think it is important. We end up teaching him. No, we help him learn. If he comes up with an question, tell him what do you think about this? Right. He would come up with some formula. Maybe it is wrong, and I never correct him. He might come up with something very weird. Okay, then build on it. Give him a confidence on his questioning process. And let us give the learner a confidence that he can find the answer himself without external help. You are only prompting him. Once that process is established, trust me, try it for 6 months. I am not an educational philosophist or anything. I have experimented myself with my son, with many other people. The only thing is, if you make them confident about the learning process, their own questioning, they ask question, they answer it himself. Maybe they make a mistake and then they correct it themselves. Don't correct them. Don't correct it. And just remember one thing that John Holt said, I always never get tired of reminding myself that the biggest enemy of curiosity is a talking teacher. Stop talking. Let them come up with the question. Let them come up with the theories themselves. Even if they are stupid theories, okay, we will talk about it tomorrow. They come up with new set of data. They say, oh, I was thinking wrong. But you didn't correct me. But if you correct them, then you are putting your thinking in their head. Let them correct themselves. This cycle gets completed, Saurav. Once the cycle gets completed, you will be free. Now, I am completely free. I don't have to teach my kid anything. I only think of ways. What more? What more can we bring?
Day before yesterday, we were thinking about this coin thing, permutation and combinations. I thought of doing this exercise. And then we did one exercise where some magical tricks, that kind of stuff. Search recreational mathematics. Any parent who wants to teach his kid, don't look for didactic mathematics, how to do additions, how to do recreational mathematics. I think recreational mathematics should be is a part of syllabus. In schools, it should be taught. Recreational mathematics is fun, like that. So True. just be free from all this. You can be. You have to just come out of that thinking and give 6 months to yourself. Right. You will see, my goodness, this boy, he can figure. We don't have to teach them how to think. This is what we have to give them. Only how to think. That's all. Once they learn how to think for themselves, they will figure out questions. Trust me, they can. And you will know how it can be done. So there is another question coming up, is that in ancient education system, this idea of learning and realizing was always emphasized upon, but it also provided questions, issues, and some basic principles. Can you please give me some idea how to assimilate this idea in everyday life today in the light of current subjects? Saurav, this is the question, I'm telling you. The person who has written this, he has understood the whole philosophy, and what he is asking is, should we give them principles of life? How to live by, isn't it? Right. I gather this is the question. Right. The academic knowledge apart, should we impart them philosophical knowledge? What are the principles to live by? Should we eat cow or not? Should we be vegetarian or not? These are the principles, right? You are living by it, but why should my son live by these principles? I am very open about it. Why should he live by these principles? Because you are forcing them to live by your principles. You see the results? What happens? The results are, when they become free, when they turn 18, then they live by their own principles. Give them a way of thinking, how to know right from wrong. And what is right, what is wrong, you cannot know. Who knows what is right and what is wrong? It's very subjective. Eating meat for vegetarians is wrong, but eating meat for non-veg is fine. So you cannot live by principles. The principles are to be decided by the person himself. You give them various options. You give them various choices. Let them make a decision by themselves. But it is very difficult. I give my son all choices. I will give you one idea. My wife would say, go brush your teeth when he's sleeping. I would say, it is your choice. You want to do it, do it. If you don't want to do it, don't do it. He would say, if I don't do it, my teeth would go bad. So he would do it. This is a principle, right? This is what we want kids to know. If you are not behaving good with somebody, this is natural. It is ingrained in us. We know how to live. The person who is born knows what good and bad is. We don't have to teach them this. I believe that we don't have to teach them principles. We only have to teach them how to figure out what is wrong and what is right. If we teach them principles, he would throw those principles the moment he turns 18. Right. This is what happens. Why they do drugs? They are engineers, they are professors, they are college graduates. Why they are doing it? Don't they know what is good and what is bad? Because if they were influenced by your principles, why they did not remember when they went free? Why not make them free now, when they are 8? My son is free now. Why he has to wait for the freedom when he turns 22? He is free now. He chooses whether he has to brush or not brush. When you are giving them choices and freedom now, when they become 22, they would become used to freedom. So they would make choices which are good for them and good for the society. They would get experienced in decision making, falling, stumbling over, getting up again. They would come up with their own set of principles. Right. True. This is my personal view. Yes. So, let's end today's session as we are overrunning.
But I think this is something we need to continue, and as we have planned with Bhagwan ji that we will do some awareness learning. So we have started, parents or individuals who are doing some interesting learnings at their space can come up and share some of the learnings on Wednesdays. So we have decided to plan some experiments like the accelerated maths and science, what Bhagwan ji was saying, to talk on all those things, maybe with examples, maybe how you can create more resources at home for your children. So we will plan something on the Learning Wednesdays as we have decided. So let's end today's session, Bhagwan ji. It was great talking to you. समय कैसे ऊपर चला गया, I never realized, like it is now. Thank you. And thank you for joining. Thank you for sharing all the things, all the experience. And let's plan a few. I think एक से होगा नहीं. We need to plan few Learning Wednesdays, and where you can focus on a particular subject on a particular day, and then move on to another on another Wednesday. So we will do that. Also come prepared. Yes. Because so, it is all on the fly. Whenever I teach somebody or I'm discussing with somebody, I never prepare any notes. It just I'm talking like the way it is. But next time is like this particular thing, the principles part. This is most crucial. We would we would make something on it. I would make a write up or something like that. Yeah. Done. This has shaken me. This particular question. Right. So Bhagwan Sarup ji is also present in our group. If anyone wants to approach, they can always approach him. He is always there. He keeps on commenting on many posts. So let's wrap up the session. Thank you so much, Bhagwan ji, for joining today, and a lot to learn from you, in fact from the entire community. And please feel free to connect with each other, because we believe that this Homeschooling India platform has grown really mature. There are so many learned person who are working on different steps, who are working on different tangents in the way we learn. So please interact with each other. Try to report the post which you see and not according to what we feel like. We don't appreciate people who are putting up spams, and also people who are trying to sell their products on our group. So please हमें माफ कीजिए उसके लिए, क्योंकि ये ग्रुप एक ऐसा ग्रुप हम बनाना चाहते हैं जहां पे हम दिल से कुछ दूसरों को दे पाए और उसी दिल से हम दूसरों से ले पाए. So thank you so much, Bhagwan ji. Thank you, beta. Keep learning, and we will have a chat another day maybe with you. आज हमने मिस कर दिया क्योंकि तुम्हारे पापा के साथ आज लंबा हम लोगों ने सैटरडे लाइव किया है. एक बार तुम्हारे साथ बैठेंगे हम. If you one thing, because if this learning, like when we do Wednesdays or anything one day, that time it is not going to be maths alone. It is going to be about life, because maths, science, stop treating them as subjects. Right. I would come up with small sessions where it could be precise for that. Great. See to that. And I look forward to meeting you again. And thank you, everybody, for giving us your precious time. Thank you. Yes. Thank you, everyone, for joining and listening. Please share the video if you want to share with anyone. Please feel free to connect with all the members of the group. Thank you so much. Have a great evening. Thank you. Thank you.